Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss the topic is stroke or CVA. CVA means cerebrovascular accident. This condition is one of the very leading cause of death. Most of the patients after 60 year this disease affecting. This means definition. Okay, हम देखेंगे definition. It occurs when there is a disruption of blood flow to the brain either due to blockage of blood vessels. The interruption deprives brain cells and oxygen and nutrients, leading to brain damage, disability, or even death. Means brain supply artery, so carotid artery और सर्कुलोफिलिस, वहाँ भी क्या होगा, ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज हो जाएगा अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से. सो वहाँ भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा. इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ भी ब्रेन सेल्स का ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो ब्रेन सेल्स में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा. इसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन डैमेज, डिसेबिलिटी और इवन डेथ. दिस इज ए मोस्ट सीरियस कंडीशन है. दीज आर दी स्ट्रोक अथेरोस्क्लेरोसिस. हमारा ब्रेन में क्या होगा, अथेरोस्क्लेरोसिस ब्रेन सेल्स ब्लड वेसल्स में अथेरोस्क्लेरोसिस डिपॉजिट होगा. इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ भी ब्लॉक हो जाएगा तो दैट इज कॉल्ड इस्कीमिक स्ट्रोक. इस्कीमिक स्ट्रोक वहाँ भी अगर रप्चर हो जाएगा तो दैट इज कॉल्ड हेमोरेजिक स्ट्रोक. सो दिस आर द मेन एरिया, फ्रंटल एरिया एंड ऑक्सीपिटल एरिया, टेम्पोरल एरिया. अगर फ्रंटल एरिया में मोस्टली कंट्रोल करता है हमारा मोटर एक्टिविटीज़, वहाँ भी फ्रंटल एरिया में अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो दिस एरिया का क्या क्या फंक्शंस है, पूरा फंक्शंस में अफेक्ट हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक. एंड नेक्स्ट इसका भी मेन कॉजेस है, रिस्क फैक्टर. फर्स्ट वन इज कॉल्ड अथेरोस्क्लेरोसिस फैट डिपॉजिट इन आर्टरीज. And the second one is called atrial fibrillation. That is one of the arrhythmia. It causes the embolic stroke and a clotting disorder, and diabetes mellitus, smoking, sedentary lifestyle, and heart defect. ये बच्चों को मेनली अफेक्ट करता है. हार्ट आर्टरी सेप्टल डिफेक्ट एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट. एंड नेक्स्ट हेमरेज. हेमरेज मेनली ओकर ड्यू टू द हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वहाँ भी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएगा. देन अल्कोहलिज्म, एज आफ्टर 60, ब्रेन एन्यूरिज्म एंड ब्रेन ट्यूमर एंड हाई ब्लड प्रेशर. दिस आर दी इसका भी मेनली causes and risk factor of the stroke, especially mainly after the old age. After 60 year is mainly affecting, but nowadays mostly affecting. So after 40 years age also it is affecting because of the sedentary lifestyle, poor control in blood pressure, diabetes mellitus, and more fatty food. These are the causes also. It's affecting the CVA. This is a most dangerous condition. And next one is called types. Types mainly 3 types is there. First one is called ischemic stroke. These are called ischemic stroke. The second one is called hemorrhagic stroke, and one more is there, transient ischemic attack. These are the called ischemic stroke. Ischemic stroke 2 types है, embolic stroke and thrombotic stroke. And most common cause of the stroke is called ischemic stroke. इस्कीमिक स्ट्रोक के अंदर में मेनली कॉमन कॉज इज कॉल्ड थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक. दिस आर द कॉल्ड ब्लड क्लॉट. इस्कीमिक स्ट्रोक देखिए, ब्लड क्लॉट, ब्लड ब्लॉक फ्लो टू एन एरिया ऑफ ब्रेन. दे आर द ब्लड क्लॉट. ब्लड क्लॉट की वजह से क्या होगा, वहाँ भी ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, वो एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा. इसकी वजह से क्या होगा, इस्कीमिक स्ट्रोक आ जाएगा. एंड सेकंड वन इज कॉल्ड हेमोरेजिक स्ट्रोक. हेमोरेजिक स्ट्रोक मीन्स हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वहाँ ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएगा. अंडरस्टैंड, रप्चर हो जाएगा तो वहाँ भी ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा. दैट इज कॉल्ड हेमोरेजिक स्ट्रोक. हेमोरेज रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स. एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड ट्रांसिएंट इस्कीमिक. ऐसे ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक मतलब मिनी स्ट्रोक ऑल्सो कहता है. इट इज ए just warning signs of the stroke also we have tell.
and it is a 24 hours में it will be to proper treatment दिया है तो it will be to patient normal हो जाएगा. It's a warning signs. That is called transient ischemic attack or mini stroke. Okay, the types of ischemic stroke, there is a two types है, thrombotic stroke and embolic stroke. Thrombotic stroke, blood clot thrombus within the blood vessels, brain obstructing flow cause damage. ब्लड वेसल्स वहाँ भी ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए वहाँ ब्लड सप्लाई प्रॉपर ब्लड सप्लाई ब्रेन में नहीं मिलेगा. द सेकंड इज कॉल्ड एम्बोलिक स्ट्रोक. एम्बोलिक स्ट्रोक मीन्स ब्लड क्लॉट embolus or debris forms elsewhere in the body, travels through bloodstream, it will become lodged in the blood vessels in the brain, blocking blood flow. मीन्स अगर हमारा किसी एरिया में ही अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लड क्लॉट अगर हो गई तो ये ब्लड वेसल्स से कहाँ आएगा, हमारा ब्रेन में आ जाएगा. That is moving clot is called embolus and a clot stacking in the artery is called embolism. The most common cause is embolic stroke is atrial fibrillation. Important atrial fibrillation, it can clot formation in the heart then travel to the brain. अगर atrial fibrillation is one of the arrhythmia, इसकी वजह से वहाँ भी हमारा एट्री में ब्लड क्लॉट वहाँ भी बन जाएगा, वो ब्लड क्लॉट वहाँ भी स्प्लिट हो जाएगा, वो ब्लड क्लॉट कहाँ आएगा, हमारा ब्लड वेसल से ब्रेन में आ जाएगा, इसकी वजह से हम वहाँ भी एम्बोलिक स्ट्रोक आ जाएगा. ओके, क्लियर. देन दिस इज कॉल्ड ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक. दिस इज कॉल्ड मिनी स्ट्रोक. इट इज लाइक ए स्ट्रोक. It affects are temporary and are often warning signs. There is high risk for having the true stroke soon. A person TIA needs emergency medical care as soon as possible. मतलब इसे warning sign जो patients just warning दिया है. Every patients also not giving this type of the warning, but after some patients experiencing transient ischemic attack, then properly treatment if you are giving, the patients have other after that it will be to the stroke आगे आने का stroke to avoid. So transient ischemia is called one of the warning signs. So we have to care about the health, then take the proper medicines and lifestyle follow, then avoid the आगे the stroke can prevent. The next is called pathophysiology. I am giving the symbol. Pathophysiology stroke a neurological disorder characterized by blockage of blood vessels. Clot from brain interrupt the blood vessels leading to the ischemic stroke. अगर clot बन जाएगा, brain में interrupt हो जाएगा, brain में आ जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, interrupt the blood flow leading the ischemic stroke. Clogging arteries or vessels, blood vessels bleeding rupture the arteries lead to the brain during stroke, result in sudden death of brain or into lack of oxygen. Means this is called hemorrhagic stroke. अगर क्लॉटिंग की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वहाँ भी ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाएगा. ब्रेक होने के बाद क्या होगा, वहाँ ब्रेन सेल्स में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ दी ऑक्सीजन एंड ब्लड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, सो वहाँ भी फंक्शंस पूरा इंटरप्ट हो जाएगा. इसकी वजह से पेशेंट्स को भी सिम्टम्स मेरे पैरालिसिस, अनकॉन्शियसनेस, कोमा, स्पीच प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम, दिस आर द सिम्टम्स आ जाएगा. क्लियर. Then this is called mainly symptoms. You can remember this. Be fast. First one is called loss of balance. Second one is called blurred visions. F is called one side of the face drooping, weakness, and A means arm or leg weakness. S means speech difficulties. T means time to call ambulance immediately. This is called spotty stroke. Warning signs. These are the one of the main symptoms. So these are the fast. These are the problem is there. We have to assess, then immediately to send to the patient to the hospital. The symptoms of aphasia. Aphasia means trouble speaking or complete loss of speech. Then this is called blurry vision. Then confusion or agitation, coma, dizziness or vertigo, headache, loss of muscle control on side of her face, and weakness or paralysis of one side of face or body, and sudden worsening loss of senses, vision, hearing, smell, taste and touch. पूरा सेंसरी लॉस भी हो जाएगा एंड
मोटर भी प्रॉब्लम आ जाएगा. मेनली हेमीप्लीजिया मीन्स पैरालिसिस ऑफ द वन साइड ऑफ द बॉडी. Then assess का diagnostic evaluation mainly history collection and physical examination, neurological examination, CT scan, MRI scan, PET scan, cerebral angiography, carotid ultrasound, EEG and ECG. EEG मतलब electroencephalogram हमारे seizure के लिए we have to using, and ECG cardiac problem के लिए we have to using the ECG. Mostly patient को doctor checking the physical examination and neurological examination, and the patient immediately sent to the CT scan, and the CT scan we have to identify. Clearly we can get the correct picture of the patient. The necessary treatment, medication, anticoagulant, medication failure anticoagulant and antiplatelet and other medication related to hypertension and cholesterol के लिए. Mainly anticoagulant we have to provide the patient. Altiplase, clot specific agent and antiplatelet, aspirin वगैरह दे देंगे. Then control the hypertension के लिए we have to control the nitroglycerin दे देंगे. Then diabetes and cholesterol के लिए we have to give the medication. Then mainly rehabilitation therapies may physical therapy, speech therapy, occupational therapy, cognitive therapy, behavioral therapy. Lifestyle changes, exercise 30 minutes day, 5 week nutrition and healthy lifestyle. This main important component you have to remember. So the thrombotic agent mainly plasminogen activate. Thrombotic drugs mainly we have to give the drug is tissue plasminogen activator altiplase to break up clot in your brain arteries within 4 to 5 hours onset of symptoms. Okay, very important drug plasminogen activator. Then mechanical thrombectomy to remove the blood clot within 24 hours symptoms. Surgical management, and to provide the stent we have to apply, and surgery to remove plaque arteries, aspirin or blood thinners to prevent the further clots. And इसके mainly prevention is mainly risk factor. हमारे managing risk factor through lifestyle changes. Medication is a key strategies include controlling blood pressure and managing cholesterol and blood sugar, maintaining healthy weight, quitting smoking, limiting alcohol, engaging the regular physical activities. And mainly nursing management assess the neurological status and GCS scale, Glasgow Coma scale, vital signs, monitor intracranial pressure, airway breathing and oxygenation, assess symptoms, IV fluid, rise to feeding, urinary catheterization, seizure prevention, position and medication. These are the mainly nursing management.